अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सेल ग्रेड क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, और लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल छोड़ा था परमिएबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि परमिएबिलिटी सिंपली है क्या। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज द प्रॉपर्टी of the cell membrane to regulate the passage of substances passage of substances in and out of the cell. Permeability, it is a property of the cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है टू रेगुलेट करती है द पैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस, एक रास्ता सब्सटेंसेस के लिए, चीजों को गुजरने के लिए, इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर या बाहर गुजरने के लिए, चीजों को गुजरने के लिए, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स से फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स को गुजरने के लिए जो पैसेज जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है जो सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड कॉल्ड परमिएबिलिटी। किस तरह से देखिए, सिंपली it is a cell having the complete protoplasm, nucleus, and cytoplasm as well. Outer layer called a cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से चीजें अंदर आना और चीजों का बाहर जाना, यानी पैसेज वे फराहम करती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है, इट इज कॉल्ड अ परमिएबिलिटी। ये चीज परमिएबिलिटी कहलाती है। परमिएबिलिटी की कितनी टाइप्स हैं, आइए देखते हैं कि परमिएबिलिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी। Types of permeability. The first is diffusion. Second is osmosis. And the third is active transport. टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन को बेसिकली हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इज आल्सो कॉल्ड अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आइए देखते हैं बारी बारी के डिफ्यूजन है क्या, बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन
In the biology, it is defined as the property of the cell membrane. इसकी डेफिनेशन जो बायोलॉजी में है वो इस तरह से है कि द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल the movement of molecules across the cell membrane the movement of molecules across the cell membrane from the region of the higher concentration towards the lower concentration from the region of higher concentration towards lower concentration. The movement of the molecules across the cell membrane from the region of the higher concentration towards the lower concentration is simply known as the diffusion. But which type of molecules? Movement तो होती है लेकिन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स की? The movement of the solute molecules. It is the important. अब ये डेफिनेशन कंप्लीट है. The movement of the solute molecules across the cell membrane from the region of the higher concentration towards the lower concentration is simply known as the diffusion. It is a biological definition of the diffusion. For example, अगर मैं simply define करूं diffusion को, the movement of the molecules from the region of the higher concentration towards the lower concentration, यानी higher concentration से lower concentration की जब movement किसी भी चीज की molecules की diffusion कहलाती है. For example, अगर मैं physical definition दूं तो diffusion की definition physical कुछ इस तरह से है. It is the simply balloon having air. अगर मैं ये बोलूं कि इन्वायरमेंट का जो सिंपल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है और बलून का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फॉर एग्जांपल 8 atm है. Having the difference between the atmospheric pressures. जब मैं बलून का मुंह खोलूंगा तो एयर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी, यानी हाई कैपेसिटी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी. इसे हम सिंपली डिफ्यूजन कहते हैं. The movement of the molecules from the region of the higher concentration towards the lower concentration, environment में low concentration है, बॉलून में high concentration है. That's why the movement of the molecules from the region of the lower higher concentration towards the lower concentration is called a diffusion. ये simply diffusion कहलाती है. लेकिन biological molecules में biologically solute molecules की diffusion होती है. ये थी सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन. इसके बाद ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है आइए देखते हैं. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से है. द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स
the movement of molecules across the cell membrane, the movement of molecules across the cell membrane from the region of the lower concentration towards the higher concentration. From the region of the lower to higher. Which type of molecules? The movement of the solvent molecules. Osmosis defined as the movement of the solvent molecules from the region of the higher lower concentration towards the higher concentration. लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाती है. फॉर एग्जांपल, it is the high concentration, it is the low concentration. The movement of the molecule from the region of the lower concentration towards the higher concentration is known as osmosis, but the molecules should be the solvent molecules. Molecules should be the solvent molecules, and solvent molecules की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहलाता है. उसके बाद थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या? देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स across the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है. बट यहाँ पर एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि it utilizes the amount of the movement of the molecules across the cell membrane, but it utilizes the amount of energy require करती है. इस मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेसिकली दो टाइप्स हैं: एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? Exocytosis, the movement of the molecules out from the cell. Movement of molecules out from the cell. Cell having the protoplasm. The movement of the molecules out from the cell. यानी चीजों का सेल से बाहर जाना, मॉलिक्यूल्स का सेल से बाहर जाना, ये एक्सोसाइटोसिस कहलाता है.
उसके बाद एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स into the cell. A cell has a complete protoplasm. The movement of the molecules from outer to into the cell, it is called the endocytosis. Endocytosis. उसके बाद एंडोसाइटोसिस की होगी दो टाइप्स। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स। फेगोसाइटोसिस, pinocytosis. Phagocytosis and pinocytosis, these are the two types of the endocytosis. आइए देखते हैं phagocytosis है क्या। Phagocytosis, simply known as a cell engulfing process. या सेल eating process भी कहते हैं हम इसको। Phagocytosis is simply known as a cell eating process or cell engulfing process. In this process, the movement of the solid molecules from the higher from the outer environment into the cell. Movement of solid molecules. Pinocytosis, it is called a cell drinking process. Cell drinking process. Taking water in the bulk forms. It is called the pinocytosis. एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस simply known as the cell eating process or the cell engulfing process, and a pinocytosis simply known as the cell drinking process. परमिएबिलिटी की टाइप्स और उसकी फर्दर टाइप्स कंप्लीट हुई। क्लास ऑफ करने से पहले एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें आपको याद रहेगा कौन कौन सी टाइप किस तरह से है। देखिए, सबसे पहले परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की तीन टाइप्स। कौन कौन सी? परमिएबिलिटी की तीन टाइप्स। diffusion, osmosis, active transport। diffusion, osmosis, active transport, permeability की टाइप।
डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को यहीं पे क्लोज करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम फर्दर लेके चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर मोर इसकी दो टाइप्स, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस को हमने फर्दर मोर लेके चलते हैं तो हमारे पास एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स आती हैं, जिसे हम फेगोसाइटोसिस और ये टाइप्स का ट्री है, जिससे आपको आसान से याद रहेगा। परमेबिलिटी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमने डिस्कस किया, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा, उसमें बस दो टाइप्स आई, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को हमने देखा, उसकी टाइप्स देखी। उसके बाद हमने एंडोसाइटोसिस को अगर फर्दर मोर देखा तो उसमें मतलब फेगोसाइटोसिस है और सिनोसाइटोसिस है हमने डिस्कस किया। तो परमिएबिलिटी आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अभी इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके चलेंगे सर मेरा दूसरा पार्ट सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।